Okay. Hi everyone. Guys, can you hear me? Okay. So we are already with short of time. Okay. So please let me know if you can hear me quickly. Just spam the chat box quickly, everyone. Yeah, 11010. Okay, fine. So today we are going to learn. So I'm just cutting some of the things for today's session because we have only 40 minutes remaining. Now we'll majorly focus on like what you have learned in the last session. Have you applied some of the things, or have you researched about what we discussed in previous session? And on the top of that, today we will building mostly how we can build our websites using AI. Okay, so how you will leverage AI to create applications, but that should not be on the cost of that you are not learning. Only AI is learning. So we are going to talk how you have to make a balance while learning with AI. Okay, guys, everyone on the same page? Cool. चलो. Cool. ठीक है, Shom, I got a question. Cool. Now tell me one thing. In the last session, we discussed about technologies, and we discussed about what are front end, what is back end technologies we are going to use. Now tell me, have you guys research कि आप आपने उसके आगे कुछ कुछ पढ़ा, कुछ देखा, कहीं से कुछ रेफर किया, कि बस अगेन सर जब आएंगे देन विल स्टार्ट विद अ फ्रेश स्टार्ट? टेल मी. ओके, समवन मेड वेबसाइट. ग्रेट. गुड. किसी ने वेबसाइट बनाई है? एनीवन यार? ओके. What about others, guys? Others? Okay, someone created YouTube HTML. Great, good. Okay. Raghav created a website where we can study through NCRT and ask question about theory. Good. So Raghav, have you implemented any AI regarding that? Ki let's suppose I have a query and I'm asking here there and I'm getting the response. Please let me know if you have created that kind of thing. No. Okay, cool. You can think in that way. Rohan created a scrolling animation portfolio website. Correct. Guys, if you can share me your work here, I will be more happier to see. And you can also share with your friends. तो जिन्होंने जो कुछ भी बनाया है, whether it is complete phase और अभी वो running phase में, do send me link here quickly. Everyone जिन्होंने कुछ भी काम किया है, I want you to just show me your work quickly. Quickly show me. Yes. कोई प्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? प्लीज लेट मी नो. ओके राघव, यू कैन डिप्लॉय. यू कैन डिप्लॉय. नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट क्विकली. लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन जो फ्रॉम योर टीम से आया. आई थिंक लेट मी जस्ट गो एंड चेक हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन. या शुभम कुमार सेड कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड वाज लेफ्ट टू एक्सप्लेन. इट वाज करेक्ट, लाइक इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इनफ. प्लीज डू लेट मी नो क्विकली. एनीवन? It was not done. Okay, cool. Let's quickly understand from the previous slide. What I mean, I think ये block तो हम समझ गए थे ना. We have ordered one pizza also. How this all this thing application working behind the scene. Now, now we covered about what is HTML. I think we have covered what is JS and what is CSS. Now we need to understand what is front end all about. चलो मुझे एक बात बताओ आप लोग. And I want answer from all of you. किसने किसने यहाँ पेपर लिखा है? टेल मी. सबने पेपर लिखा है ना, 10 12 का? 12 का पेपर सबने लिखा है? यस और नो? यस और नो क्विकली. यस और नो. अच्छा, जब आप पेपर लिखने जाते हो तो डू यू गेट एनी एडवाइस फ्रॉम योर मदर और फादर?
Any advice related to paper? Any advice? या जस्ट राइट दैट एडवाइस, जो भी आपको जब कभी भी, हाँ समवन सेट पूरा करके आना, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ड्रिंक वाटर, ओके ओके, कूल कूल, ओके ओके। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, आराम से, घबराना नहीं, ओके ठीक है, अच्छे से लिख कर आना, ओके, नेवर पैनिक, डोंट गेट नर्वस, राइट योर यू नो यू एवरीथिंग, ओके फाइन फाइन फाइन। एग्जैक्टली exactly. एक बहुत ही अच्छा सा किसी ने लिखा है, अच्छे से पेपर लिख के आना। नाउ टेल मी वाई समवन इज सेइंग अच्छे से लिख के आना, टेल मी। वाई योर मदर ऑलवेज से कि पेपर अच्छे से लिख के आना, प्रेजेंट करना अच्छे से, वाई? नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन गाइस। आई गॉट माई आंसर, एक एक क्वेश्चन जो मैं ढूंढ रहा था आप लोगों से कि पेपर अच्छा करके आना, पेपर अच्छे से लिख के आना। आई थिंक द आंसर गिवन बाई अदनान। सबके आंसर ठीक है बट मुझे अभी जो वो रिलेवेंट लग रहा है। नो, अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। समवन इज सेइंग गेटिंग मार्क्स, गुड मार्क्स। वो मार्क्स गुड क्यों हो जाएंगे अगर आप अच्छे से पेपर लिख के आओगे? एग्जैक्टली, देर इज वन वर्ड फ्रॉम आर्का, ही इज सेइंग impress the teacher, impress the evaluator। एग्जैक्टली, मोहम्मद अदनान सेड प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। चलो, now I will tell you from scratch how you think, because right now you guys are living in a world of AI जहाँ पे ना you get the things on just one click, one prompt, ठीक है। बट उसके behind आप you have to understand कि when I learned these things, तो what was the thought process, ठीक है। चलो एक बार उसको देख लेते हैं। डू लेट मी नो अगर आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इट्स विजिबल टू एवरीवन ना? करेक्ट, ठीक है चलो। अभी ये मेरे पास एक पेज है, और मुझे यहाँ पे ना आई गॉट वन पेज एज विकीपीडिया। लेट मी जस्ट सर्च विकीपीडिया, ठीक है। सो दिस इज वेबसाइट जहाँ पे यू गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द पेज, ठीक है। नाउ इफ यू सी विकीपीडिया, नाउ इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, पहली बात, करेक्ट ना? बट कैन यू सी एनी इमेज, एनी एनिमेशन? कैन यू सी एनी इमेज, एनी एनिमेशन? कुछ नहीं है ना, कि जो बहुत ही आपको वॉ फील करा दे। नाउ लेट्स ओपन एनी अदर वेबसाइट, लेट्स ओपन फ्लिपकार्ट। नाउ लेट्स ओपन एप्पल, लेट्स ओपन एप्पल। And one more thing, let's open one more website. Let's suppose Samsung. Now, you need to understand why I'm doing this activity. And answer आप लोग ही बताने वाले हो मुझे, ठीक है। Now, मैं इस वेबसाइट पे आया हूँ। Now, what is happening here? Now, Samsung is giving me some information. देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि I am a user, okay? And if I want to give more information, I think slide is coming. Cool. Now, guys, you have to understand, I am a user. So whenever I visit your website, so what I need, tell me what I need. Getting information in different forms. Very correct by Ashish. Very correct. Very correct. Now that information can be presented. I think in the last lecture, in the last session, we talk about there are multiple types or multiple ways to pass information. It can be visual, it can be in written form, it can be in video form. Correct now? Now, why we prefer visuals? Tell me. Why we prefer visuals and video mode? Why? Why? It is attractive, okay? It is engaging, okay, and it is attract more people. So when it comes to, yeah, very correct one by I think Arohan, eye catching, he may said to get attention. Now if I compare this website, now this is also giving me information, this is also giving me information,
मे बी, बट मैं इस पे इतना ध्यान ना दूं बिकॉज उसका यूआई बहुत बेसिक है। व्हेन आई से यूआई, मतलब दिस इज, आई एम ए यूजर एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद वेबसाइट, आई एम टॉकिंग विद वेबसाइट। Okay, now website, if I go here, let's suppose I got main page, I got current events. Now these are the things that I can explore on this website. It means I am using this website now. So there are two things. When you use a website, one is user interface and another one is user experience. Guys, please understand. One is user interface and second one is user experience. Now, maybe user interface is very simple on this particular website. Very simple, like everything is written here. Whatever I want to see, I can just click. But what about experience? Do we have any wow factor here? Do we have any wow factor here? Okay, this is very amazing. How this happened? How this happened? This is not. This is actual or factual information. Now, you know one more thing right now. You will get a lot of YouTubers who create podcast. Correct? I'm not going to open YouTube right now here. I'm just telling ki YouTubers also create a lot of podcast. And what they are giving? Tell me. What they are giving in their podcast. They are again giving the information. They are again uh, talking with someone else on information, on reviews. Now, this can be the same now. If any information exists here on Wikipedia, you can create a podcast. Yes or no? As a YouTuber, you can create a podcast now. Now, what will be the difference between these two information? Let's suppose I have one member. Let's suppose Raghav. Raghav is a YouTuber. Okay. Now, Raghav want to create a podcast. Let's suppose, and podcast is totally meant on, they are totally based on current events. What is happening in the market, what is happening in the world, what is happening in the world of technology, in the world of politics, and everything. Okay, now let's suppose Raghav want to create a podcast on FIFA. Okay, it can be any event. Now, if Raghav taken the reference of this particular website, that is Wikipedia, और उन्होंने वहां से एक आपने कहा कि आप जाके वहां पढ़ लो, और सेकंड राघव was smart. Raghav started, okay, I will create a video. Now tell me which information you will perceive first. Is it the written form or is it the form which is in the form of video? Tell me. Why? Now tell me, यूजर एक्सपीरियंस दोनों में कैसा है, इन टेक्स्ट फॉर्म एंड इन वीडियो फॉर्म? इज इट सेम और इज इट डिफरेंट? Yes, exactly, there is a very good word from Vimal. The impact is different. Exactly, guys, I'm talking about whenever you create your website, you have to create an impact. Okay, you have to create the impact on user. Oh my god, what you have created. Okay, now if you see on Samsung, now they have this kind of interface. Now again, if you go to Apple, now these guys have worked very hard, like on different things. Let's suppose if I select Mac, now this is the way they created their website. Even if you open and go for any MacBook or any store wala link, they will give you a new set of experience. Now this is all about, we are talking as passing the information, giving the user a wow factor with the help of showing every information to the user in a way that user can understand, and that is all about front end. यूजर को जो दिख रहा है ना ये, दैट इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड. एंड हाउ यू क्रिएट फ्रंट एंड? टेल मी, what text tag you use to create front end? Yeah, guys, please write in chat box as per last lecture, and like, you can also tell me your thoughts. Someone said HTML, CSS, someone said React. Very correct, very correct. Okay, any other tech that help you to create front end? Now let's do a Google search. Let's do a Google search. Tech to create uh tech to create front end applications. Let's see all the list. Let me just go to the AI mode. Now, guys, can you see there are many things that will come into the picture? The core foundation. Now you have to understand what is the core foundation.
HTML, CSS, JavaScript, and TypeScript. But especially you can go with these three: HTML, CSS, and JavaScript. Now again, the word is what? Core. If you know these technologies, you can learn what? All the technologies that is coming in the way. ठीक है? तो whenever you write something, whenever you draw something, you know this is a tag, this is a H1 tag, this can be H1, H2, H3, H4, H5. But ultimately वो है क्या? HTML ही ना? Correct? Now when you create front end, you have these tools to learn. So we have React, we have Vue.js, we have Angular, all being based on what technology? One language, that is JavaScript. Correct? Anything ये मैं भी डिस्कस नहीं करूंगा. I will not give you a lot of information, but yes, this is exercise that you have to understand कि what are the tech tools present in the market that help you to become a very good front end developer. तो फ्रंट एंड समझ में आ गया. How you represented your answer sheet, the good your answer sheet look gives a very clear information to the evaluator, and he can give you marks very easily. ठीक है? राघव, share the link, no problem. Cool. Now let's talk about backend. Now मुझे एक बात बताओ, आपने जो आंसर शीट पे जो लिखा, from where it is coming? Whatever answer you have written on your answer sheet, tell me from where it is coming. Where that thought process is coming. Who is making the decision? Tell me, guys. Please write in chat box. Who is making the decision? Us nahi. I just want go one more level deep. Exactly, I got one answer. Mind from Ashish also. One more level, brain. So human brain is one of the, I think, the smartest thing happening or even though exists in this whole world. It creates a lot of things. Now your brain think, okay, ये आंसर ऐसे लिखना चाहिए, and then you wrote that answer on your answer sheet. So back front end is that part and back end is your brain, जहां से वो आंसर क्या हो रहा है, जहां से वो आंसर फ्लो हो रहा है. करेक्ट ना? कि लॉजिक कैसे लिखना है. एंड थर्ड इज ऑल्सो व्हाट, आपने उसको याद भी तो किया होगा ना. सो यू हैव सम थिंग्स टू स्टोर इन माइंड. सो दैट इज स्टोरेज. That is what we known as databases. So I have given you a very scratch example so that you can understand. You can understand. Okay. Now databases, I'm fairly valid. It's a cloud, but it depends on कि वो अब आपके पास जो डेटा है वो तो लोकल में ही स्टोर है ना. You cannot store your data out of your brain. Correct? ठीक है? Cool. Guys, you understand what is front end and what is back end? Now I've shown you एग्जाम्पल जो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा कि अगर मैं पेपर में प्रेजेंट कर रहा हूँ टू समवन, दैट इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड आई एम क्रिएटिंग. उसको जो स्ट्रक्चर करना है, उसको कैसे डेटा लिखना है, क्या डेटा लिखना है, कितना लॉजिक लिखना है, दैट्स ऑल कमिंग फ्रॉम ए ब्रेन. एंड दैट इज वाई यू नेवर शो योर बैक एंड पार्ट टू योर यूजर, बिकॉज यूजर को नहीं मतलब है. अ इवेल्युएटर व्हेन इवेल्युएट्स योर कॉपी डजंट वांट टू नो ना कि वो आपने लॉजिक कहाँ से पढ़ा है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द फोक्स आर, everyone is not referring to the same book ना. करेक्ट है ना? Maybe you have referred some other books for maths. I have referred some other books for maths. But ultimately, when you are writing, you are picking the best out of all the books. You are remembering that thing, you are practicing that thing, and then delivering that thing into the exam. ठीक है? Very correct example by Adnan. Wiring. Now, if you see electric fitting, so bulb में जो लाइट जल रही है, that is a front end. और अंदर जो वायरिंग है आपको नहीं मतलब है कि कौन सा वायर लगा है उसमें. ठीक है? चलो. सो गाइज ये हमने डिस्कस कर लिया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड अवर फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग एआई. सो एवरीवन, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना चाहूंगा, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि देखो अभी आपके टाइम पे एआई है, बट लेट सपोज अगर एआई एक दिन के लिए बंद हो जाए, देन व्हाट यू विल डू? टेल मी व्हाट यू विल डू इफ एआई इज, लेट सपोज एआई ने एक नोटिस निकाल दिया कि 7 दिन के लिए एआई बंद है. हाउ यू विल वर्क? यू विल टाइप योर कोड, करेक्ट? तो इसका मतलब अभी तक आप लोग क्या कर रहे हो? कॉपी पेस्ट कर रहे हो अभी तक. यस और नो? गाइस टेल मी हु इज, अगर किसी ने अपनी वेबसाइट बनाई है तो किसने किसने पूरा कोड खुद से लिखा है? आई नीड वन यस.
प्लीज प्लीज मुझसे झूठ मत बोलो, बिकॉज आई कैन नॉट सी। आई वॉन्ट एनी वन इन द रूम जिसने खुद से पूरा कोड लिखा हो। एनी वन इन द रूम। I have made basic website by myself. Good, 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 good. But most of you have used AI, correct ना? Correct, 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 correct. Now what I want कि I'll just take back you to 2010। हम पुराने टाइम में चलते हैं, जब मैंने शुरू किया था ये सब। ठीक है, इवन जब मैंने सोचा था, जब मेरे फ्रेंड्स कोडिंग कर रहे थे, देन व्हाट दे आर डूइंग, एंड दैट इज द वे यू लर्न बेटर। यू हैव अ पावर ऑफ एआई, बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एआई के साथ आप भी सीखो। इट्स नॉट ओनली एआई इज लर्निंग, करेक्ट? इट्स नॉट ओनली एआई इज लर्निंग। तो आई विल जस्ट टेक दिस स्लाइड, उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्रिएशन ऑफ द वेबसाइट। कूल। सो इन देखो, बेसिक वे, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग अभी कहाँ जाते हो? व्हाट इज योर फर्स्ट मोड और मीडियम टू गेट इंफॉर्मेशन? टेल मी। वेब, करेक्ट। समवन सेड गूगल, समवन सेड चैट जीपीटी। तो मोस्टली लोगों का अभी जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है ना, दैट इज बिकम्स एआई टूल्स, करेक्ट ना? हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। वी सर्च अ लॉट ऑन गूगल, देन वी गो फॉर स्टैक ओवरफ्लो। नाउ आई वांट टू डिस्कस स्टैक ओवरफ्लो बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज दिस वेबसाइट ऑल अबाउट। नाउ दिस इज अ कम्युनिटी जिसको डेवलपर्स ने ओवर द टाइम बिल्ड किया है। जब से वेब एग्जिस्ट कर रहा है, तब से लोग अपने अपने कुछ ना कुछ थॉट्स बना रहे हैं, बिकॉज एआई पहले तो था नहीं। तो पहले लोग खुद से लिखते थे ना कोड, इवन तो काम तब भी होता था। नाउ आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि how to think from scratch, how to search your answer without even directly referring to the answer. You should know the pain that you have to face if things are not in your way. If ChatGPT is shut down for 7 days, you should know the way. Now, if I just write an answer, HTML. So if I ask the question, now this is a web page where you can ask question, and telling you the community is so strong कि क्वेश्चंस, आपको हर एक क्वेश्चन का ऑलमोस्ट आंसर मिल जाएगा। इनिशियली दिस इज द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ टू बिल्ड योर वेबसाइट। ठीक है, नाउ, और इट इज वेरी पॉपुलर इनिशियली। नाउ लेट्स सी। अब देखो, जैसे ही मैंने एचटीएमएल लिखा है, कैन यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड? 11,85,548। 11 lakh questions on HTML. Now let's write JS. You can see 14 lakh questions. CSS, 8 lakh questions. Let's write Python. Guys, give me any other जो हम देखना चाहते हैं, any other website. Now, 22 lakhs almost. Let's write Java. Go with Java. Now, crazy numbers. Let's write C++. Now, can you see? 8 lakh questions. Let's write TypeScript. In short, TypeScript we can write TS. Now, 1,83,000. Now, you can understand how big this community is all about, and this is totally code and totally tech discussion. ठीक है? So I will just take 5 minutes on this, and then we'll discuss why this is very important. So let's suppose I want to understand how JavaScript works. So I've written the whole statement. जो आप लोग जीपीटी में करते हो, आई जस्ट वांट टू डू हियर टू जस्ट मेक यू मोर कंफर्टेबल कि और सोर्सेज हैं जहाँ पे लोगों ने बहुत काम कर रखा है। लेट्स सपोज I just open this, and let's suppose I just okay. Let me just take any question. Now let me just take this question. Now this question being asked 6 years ago, modified 4 years ago. कितने लोगों ने देखा इसको? 2K. No, GitHub and this is different, Arka. This is a discussion panel. Discussion, I would say forum जहाँ पे you discuss with a lot of developers. Now if you see, if I like this answer, now you can see this is the question part, guys. This is the question part. Now this is the answer. How many folks answered? 3 answers. उसमें से भी, if you like the answer, you can just upvote it. Now the number changed to 9. If you don't like the answer, you will just downvote. Now what I want कि अगर लेट सपोज मैंने कोड ट्राई किया, मेरा कोड चल गया, आई विल जस्ट अपवोट।
दैट विल हेल्प अदर डेवलपर टू सेव टाइम कि क्या मुझे ये कोड ट्राई करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए. या वेरी करेक्ट, रेडिट फॉर कोडर्स, वेरी करेक्ट वर्ड. ठीक है. सो दीज आर डिस्कशन फोरस. आई एम टेलिंग यू, when you ask GPT, you will get only that content, or I would say that thing that is already being exist in your prompt. Prompt से बाहर का GPT नहीं देगा आपको. बट हेयर यू कैन गेट अ होल ओवरव्यू कि उस पे क्या क्या क्वेश्चन आए. अगर मैं एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में, दैट इज क्लोजर. नाउ यू कैन सी क्लोजर्स, हाउ जावास्क्रिप्ट क्लोजर वर्क. नाउ this question created 17 years ago. Maybe some of you have not born that day. Understand? तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि this forum is too old and too trusted. 1.6 million times folks have viewed this question. They learned from this. Now 8,349 लोगों ने सिर्फ अपवोट किया है. Okay, so this was the initial time that we learn. This is a source of. ठीक है, उसके बाद we refer to documentation and then we code and then we deploy. But आज के टाइम में क्या है? What you do? सब कम हो गया ना. You give your prompt, you got your answer, you just paste that thing on VS Code. VS Code सबको पता है. What is VS Code? What is VS Code? VS Code, VS Code. So it's a editor. जैसे हमारे पास editor होता है ना. It's a editor to, I would say it's a ID, but I am not going into depth. But हाँ, it's a editor where you write your code. तो उसके पास बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं. ठीक है, चलो. ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस, बट अभी हमारे पास टाइम कम है. सो विल डिस्कस द मेजर पार्ट. आई थिंक यू एवरीवन नोज व्हाट आर द एआई टूल्स यू गाइस आर यूजिंग राइट नाउ, करेक्ट? एवरीवन नोज हम कौन कौन से एआई टूल यूज कर रहे हैं. यू कैन सी टुडे वी आर गोइंग टू यूज वन मोर टूल कॉल्ड लवेबल. सो व्हाट आई वांट, एक्सप्लोर दिस वेबसाइट, ओपन दिस वेबसाइट ऑन योर लोकल सिस्टम क्विकली. ठीक है. एंड विल ट्राई टू क्रिएट अ वेबसाइट. We'll try to create our first website that will be our portfolio. Everyone know about himself or herself. Let's try to create that as a website. ठीक है. Now we'll also understand. अच्छा, prompt क्या होता है? What is prompt बच्चों? What is prompt? What is prompt? Now prompt is all about that you need. आप उसको written form में लिखते हो. ठीक है. Prompt is kind of a statement that जो information आप देते हो एक अपने tool को. It can be any tool. It can be any AI agent that gives more information. ठीक है, चलो. ना यार, देर आर टू थिंग्स. वन इज बैड प्रॉम्प्ट, अनदर वन इज गुड प्रॉम्प्ट. देखो इसमें क्या डिफरेंस है. इसमें मैंने केवल एक बोला है उसको जनरल वे में, बिल्ड अ वेबसाइट. अब उसके पास इंफॉर्मेशन क्या गई? बिल्ड अ वेबसाइट. बट कौन सी? क्या चाहिए उस वेबसाइट पे? कौन सी वेबसाइट है, क्या चाहिए? नो इन्फॉर्मेशन. अदर देन दैट आई हैव गिवन अ गुड प्रॉम्प्ट. व्हाट आई एम टेलिंग, इन डेप्थ प्रॉम्प्ट में मुझे बताना है उसको कि यस, हे लिसन, यू आर अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर specializing in React and AI integration. Now, what to build? This is a goal. How to build? What are the information? What are the tech stack you need to use? This is the information. Then, what are the core feature that I need? How my UI, how my browser पे जब वो कोड रन करेगा तो मेरा ब्राउजर पे कैसा दिखेगा, वो उसका पेज, वेब पेज कैसा दिखेगा. दैट इज ऑल अबाउट यूआई यूआई यूएक्स एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट. नाउ हियर वी हैव कंस्ट्रेंट. अभी आप इसको मत, यू कैन लीव इट. नाउ उसके बाद यू कैन गिव द आउटपुट फॉर्मेट. आपको आउटपुट कैसा चाहिए ये बताना पड़ेगा. नाउ दिस इज द वे you give a very good prompt to AI. Cool. Now, what I want you guys to first write this prompt that is a bad prompt and see how much information he requires more. So अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैंने लिखा build website सी. अच्छा, उससे पहले guys I want everyone to just create an account on this. Everyone create account on Lovable AI. I will just sending the link here. Please create. Guys, please do sign up and then we'll start using. Now, if I say here, now it is asking for, guys, can you see this? What website you want to build? Okay. So share a topic or something. So I just said, I will create a what? Portfolio.
Now I will just review it, submit it. ठीक है, अगेन मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. आई कैन नॉट कंट्रोल द आउटपुट राइट नाउ. इट कैन बी इन एनी फॉर्मेट. इट कैन बी एनी फॉर्मेट एज पर AI का थिंकिंग. Now, if I want to give some other prompt, let's suppose I want to give very detailed information. Now, I need to copy this command, sorry, this prompt, and now I have to take a different tab altogether. So let me just open a new tab with new chat. Now here, okay, अच्छा ये बन गया तो एक बार इसको देख लेते हैं. Now it is giving me design. Okay, so now I need to select what design to choose. तो जो मैंने prompt में केवल simple build बोला था, now is asking me कि अच्छा कौन सा. मैंने कहा okay, select this. Now again it is taking more time, more time, more time, more time. Okay, instead of that, let me just open in a new window, Lovable. And now let me give that explain pura better wala prompt. And let's see. Now it is taking more time and it will first take all the things. Now here if you see, now it is reviewing my work, doing my work. Okay. Now, now your part is everyone. I'm just sending this prompt to chat box. Please try to copy it. देखो एक बार कॉपी कर सकते हो क्या आप लोग? लेट मी नो. मैं इसको 2 बार में भेजता हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड. मैंने टेक्स्ट साइड तक देख लिया. लेट मी गिव यू द सेकेंड प्रॉम्प्ट हेयर. इसके आगे का कोर फीचर तक मैंने आपको भेज दिया है. लेट मी जस्ट सेंड दिस. guys, please let me know if you can pick the prompt from, you can copy the prompt from the chat box. Please write yes if it is possible. Can you copy this? Yeah, cool, cool. Now give this prompt to Level AI quickly. Everyone on the same page, they are building something, correct? Yes or no? Yes or no? Now I got my first page. Now if you can see, now this is the home page looks like. This is the home page it looks like. Okay. Now this is work, this is about us, this is context. ठीक है. Now instead of this, यहाँ पे हम देखते हैं. Now it is taking more time. Now you can see the difference. You can see the difference. It is taking more time. It is because you have given a very detailed prompt. You have given everything that you need from that particular AI to do for you. Okay. So my advice, whenever you're using any AI tools, first I request everyone, please be mindful. Please read that code because you are responsible for that code. In some cases, if you are pushing that code to the production means जब आपका कोड लाइव हो जाता है, ठीक है, आपको जो वेबसाइट मिल जाती है, तो आप ही हो जो रिस्पॉन्सिबल हो हर एक फीचर के लिए. ठीक है. Because if you don't know what code you have written, you will not able to identify the error. You will not understand ki how I can fix it, how I can debug the code. Now visiting your code, understanding where the problem is, fixing it is all about, it's known as debugging. Now you have to understand कि मैं debug कैसे करूंगा. मैंने कोड तो लिखवा लिया है बट मुझे पता ही नहीं है कैसे लिखा है. ठीक है. Now here you will see it will take more time. ठीक है. Now this is what I want to convey in this session कि whenever you use AI, now this part is done. यहाँ पे आप कोड लिख रहे हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि without AI or with AI what you're doing. You can also compare right now कि without AI I have requirements but I have to do a lot of research. In your case, you have prompt. You should know what is prompt engineering. So I recommend everyone to search about this prompt engineering, get good resources and try to learn this. Okay, how you can create and write a good prompt. Then you have a documentation. So by older time, without using AI, we have, let's suppose, Stack Overflow and documentation. That is the only source of truth for us to create any website. Now here you have AI prototypes. You have where in the previous time we have to write every single line. Now here you have to just review the code.
You have given the prompt, you got your code. Okay, you got your code, and then what you have to do is just copy paste. So here, even AI also doing the debugging part. But now you can see one side it's automated. Second side it is all about manual. I'm not saying you should learn manual things, but what I want, it simply means ki you should know what you have written. You should at least understand. You don't need to remember every code. You don't need to do any rectification of your code. But you should have a thought process. Okay, if any bug comes maybe 1 year down the line, okay, then I can visit the code. I will sit with the code and do it. Okay. Yes, we should know the process. ठीक है. So this was the major discussion. I'm so sorry I got very less time today. But the agenda of this particular webinar was all about कि you have to understand कि you have to use AI, but you should also learn. You should understand your code. Okay. And nowadays creating website becomes a very easy task, but debugging still remain the same. I'm telling you, debugging still remain the same. It's a time taking process. It's a process where your mind will stuck somewhere. It asks you for more time. It asks you for more knowledge. You have to support your mind in that way. You have to trust, okay, I can learn this thing and I can fix it. Okay guys, so this is what I want to convey today. Please let me know अगर आपका किसी का वेबसाइट बन गया है. Anyone, please send me the link here. Anyone जिसका वेबसाइट बन गया है, send me the link here. I got one link from Raghav. Dev, Avi, I cannot show you the bug code. I don't know what you're asking, but yes, what kind of bug code you're asking? I'm so sorry. You can just send me in the feedback. We'll pick after that. We can connect also one. I got someone from something from Arca. We have from, okay, Vimal also sent. I think किसी का ये link काम नहीं कर रहा है. Request access. इसको please आप एक बार refresh करके भेजो. Now this is the landing page. Good website. Nice. So it's kind of itinerary planning. Good. इसमें मुझे नहीं है एक्सेस. स्टार्ट बिल्डिंग. ओके. ठीक है गाइस, प्लीज एक बार अपने लिंक अपने आपस में शेयर करो. ट्राई टू शो योर वर्क. ओके, आई बिल्ड दिस थिंग. इवन द प्रॉम्प्ट इज सेम, बट आई एम टेलिंग यू द यूआई विल नॉट बी द सेम फॉर एवरीवन. करेक्ट. You can check, you can share your link between your friends and family. You can say, okay, I created a website today. Okay. So this is the fast pace learning that you have to adapt. But remember my word, you should know what you have written. It may be one line, it may be 1,000 line, it may be 10,000 line. Yeah, that's great, Arga. That's great. ठीक है guys. So on this note, I just want you to at least build few website before you coming to the campus. So you should have something to show. Okay, sir, I have created this. Now tell me what next. So that question should be coming from your side, sir. Now what I can do? And I met one student yesterday. He booked one-on-one with me, and he asked me, sir, I created this thing. Now tell me what I can do next. So you should know what is the next step, what should be your next technology. The more quickly you learn, the more quickly you will get a new challenge. Don't say ki MERN stack is the only way. I'm not saying ki if you learn only HTML, CSS, JavaScript, that's all. No. World is evolving in every tech. World is waiting for you to learn more tech and get ready for new opportunities. Okay, guys. On this note, I'm just ending this session. But if you want anything to share, or if you want to connect, please connect with your success team. You can connect with me at any time point of time. I will surely give some slot to you, but that should coming from your side. Okay. ठीक है. There, I think we can connect one-on-one after that. I'm so sorry, अभी मेरे पास time नहीं है. Please connect with me. Okay. Everyone, those who want to connect, they can just send message to their I would say the sir जो manage कर रहे हैं meeting. They will surely connect with you. Okay. Okay guys, thank you so much for your time. Keep building more websites. Yeah. Bye bye.